या हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में ना हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो आई टेल यू फ्यू ऑफर्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन माय ऐप। सिर्फ इस साल का लास्ट ऑफर रहेगा आपके लिए, तो विल ट्राई टू स्पीक ऑन दैट। बस मैं एक बार या फाइन। सो फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन शेयर। या तो आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चर का जो डिजाइनिंग होता है ना, किस किस के लिए आपको स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करना होता है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग को कर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू डिजाइन योर स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट इज आपका स्टेबिलिटी के लिए। जस्ट 1 मिनट, जस्ट चेकिंग। एक मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग अगेन। माय वीडियो इज या हेलो हेलो एवरीवन। तो क्या मेरा स्क्रीन, हाँ ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? या फाइन, ठीक है। तो या जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे ना, आपको स्ट्रक्चर कभी भी ना इन 4 पॉइंट्स के लिए आपको 4 पॉइंट के लिए आपको डिजाइन आई मीन 2 पॉइंट के लिए तो डिजाइन करना है। वन इज आपको स्टेबिलिटी के लिए करना होगा, फिर आपको करना है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आता है आपका सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टेबिलिटी मतलब जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर को बनाओगे वो स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह से स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ओवरटर्निंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपका स्ट्रक्चर है, कुछ लोड आने के बाद, लेट्स से कोई यहाँ पे लैटरल लोड आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लैटरल लोड देयर शुड नॉट बी अ ओवरटर्निंग आल्सो। स्पेशली 2 पॉइंट है जो स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग का जो पॉइंट है, स्पेशली इन केस ऑफ आपका डैम्स और रिटेनिंग वॉल है ना, वहां पे इसको ज्यादा इसका यूजफुल होता है। नॉर्मली बिल्डिंग में वी डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, क्योंकि बिल्डिंग में क्या होता है, आपका बीम रहेगा, कॉलम रहेगा, दे ऑल आर स्टिफ एलिमेंट। बिकॉज ऑफ दो स्टिफ एलिमेंट एंड ऑल ना, आपका बिल्डिंग का कभी इस तरह से स्लाइडिंग होने का या इस तरह से पूरा ओवरटर्निंग होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। बट वेयर एज इन केस ऑफ योर डैम स्ट्रक्चर और इन केस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, क्योंकि वहाँ पे लैटरल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एंड इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल जो आपका स्टेम है, सिर्फ स्टेम कैन टेक दैट लोड। बिकॉज ऑफ दैट वहां पे स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग का चेकिंग आपको करना है। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ चेकिंग। तो स्ट्रेंथ में क्या क्या होगा, फर्स्ट इज मोमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, एंड सेकंड इज आपका फोर्सेस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। मोमेंट क्या रहेगा आपका, जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके लिए आपको चेकिंग करना पड़ेगा। सेकंड इज ट्विस्टिंग, और यू कैन कॉल इट एज अ टॉर्शन। सो दैट इज अ सेकंड वन। ट्विस्टिंग और टॉर्शन में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ स्केल, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग। सेकंड इस ए वाला है ना, अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं, देन दिस बिकम्स माय ट्विस्टिंग मोमेंट। इन द सेम वे आपका फोर्सेस, फोर्सेस में दो आता है, एक आपका शियर फोर्स, एक आता है आपका एक्सियल फोर्स। So shear is something which is going to break down। अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज शियर। तो इस तरह से अगर मैं इसको कट कर दूं, वी कॉल इट एज अ शियर। एक्सियल फोर्स मतलब ये आपका अगर आपका कॉलम है, तो इसके ऊपर अगर स्ट्रेट लोड आएगा, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फोर्स। ये आपका एक्सियल होता है। नेक्स्ट थर्ड इज दैट यू हैव टू डू फॉर द सर्विसिबिलिटी चेक। मतलब जो भी बिल्डिंग आप बनाओगे ना, वो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट शुड नॉट डिफ्लेक्ट टू मच, राइट। डिफ्लेक्शन के लिए आपको चेक करना है। सेकंड इज क्रैकिंग, तो अगर उसमें ज्यादा क्रैक्स एंड ऑल शुड नॉट कम, राइट। सो दिस इज फ्रॉम सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे, यू हैव अ कोड बुक। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं विच इज नॉट इन अर्थक्वेक जोन, देन यू हैव टू फॉलो अ कोड बुक कॉल्ड एज SP34। अगर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो, if you're putting a structure in the earthquake zone, then you have to follow a code called as IS13920, which is for the ductile detailing। ठीक है, समझ में आ रहा है? So these are the few points which I wanted to explain. In the same way, आपका कुछ और points है, you can even understand this point also, okay? Yeah, next point is, okay, anyhow ये वाला नहीं चाहिए, we'll go back, we'll go back, we'll check out how many people are yeah, शशांक दुबे, कितने लोग लाइव है? There are 4 people live। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट माय कोर्स आल्सो। एक बार आप, क्योंकि अभी हमें ऑफर चला रहे, क्योंकि मेरा ऑटोकैड नहीं चल रहा, तो आज मैं आपको कोई ड्राइंग ओपन करके एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई हैड फ्यू ड्राइंग्स टू एक्सप्लेन, एनीहाउ कल जब ऑटोकैड सही हो जाएगा उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट माय कोर्स राइट नाउ, एंड फिर विल डिस्कस ऑन फ्यू मोर पॉइंट्स। देखो, अगर किसी को ना ये सारी चीज सीखना है ना मोर बेटर वे, हमारा अभी ऑफर चल रहा है अपने सिविल ब्रेन्स के ऐप में।
आपको मैं सारे चीज प्रैक्टिकली साइड से पढ़ाऊंगा, जिससे पूरे बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स का प्राइस आपको लगभग 8,000 का है, ऑन ऑफर यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 6,999। इसमें मेरे जितने भी फ्यूचर के कोर्सेस आएंगे वो भी आपको मिलने वाले हैं। मैं एक बार इसका पूरा कंटेंट दिखाने वाला हूँ। इसमें आपका जो कोर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। आई विल गो टू द हिंदी लैंग्वेज। या तो हिंदी लैंग्वेज में देखो, फर्स्ट हम आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 एंड लेवल 5, 5 लेवल रहेंगे। तो हम लेवल 1 में क्या करेंगे, विल टीच एकदम जीरो लेवल से कि स्टार्टिंग साइट एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो सारे चीज हम इस पूरे लेक्चर्स में हम समझेंगे वन बाय वन। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारे चीज आपको मैं प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन अ कोर्स फ्रॉम मी, डेफिनेटली आप लोगों को पता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो कोर्स हम और भी आगे जाके इसको हम अपग्रेड करेंगे, और जो भी हम आपको पढ़ाएंगे राइट फ्रॉम द सेंटर लाइन मार्किंग, अगर आप हर एक चीज यहाँ पे देखोगे, एवरीथिंग इज थॉट प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट ओनली। ये सारे चीज हम आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाले हैं। यू कैन चेक आउट ऑल दिस थिंग। इस लेवल का टीचिंग आपको हम करेंगे। हर एक चीज जो प्रैक्टिकली आप साइट पे करोगे, किस तरह से आपको ड्राइंग को पढ़ना है, किस तरह से आप सेंटर लाइन का मार्किंग करोगे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, so that you get a feel to what level you are going to learn all these things। और जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम अ साइट ओनली। तो इस तरह से हम आपको साइट पे लेके जाएंगे, और साइट से हर एक इमेज विल एक्सप्लेन उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, साइट पे आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। सो इस लेवल पे हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, सो दैट यू हैव अ वंडरफुल नॉलेज। तो इस तरह से आपको 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब प्रैक्टिकली क्या है, एंड हर एक चीज़ जब हम पढ़ाते हैं ना प्रैक्टिकली साइट से, आपको पूरे स्लैब का इमेज, स्लैब का ड्राइंग हम पढ़ाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली। एंड फिर इसके बाद हम आपको ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, छज्जा, जितना भी काम होगा इंटीरियर का, हर एक चीज हम आपको स्टार्टिंग से एंड तक विल टीच यू, सो दैट you'll have a wonderful knowledge about the site execution। तो ये पूरा आपका साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर एंड ऑल। इसके बाद एक बार आपका साइट एग्जीक्यूशन होने के बाद नेक्स्ट विल गो फॉर द ड्राइंग रीडिंग का कोर्स। सो इन द ड्राइंग रीडिंग विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट 20 प्लस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, जहाँ पे एक G+3 रेजिडेंशियल का बिल्डिंग है। इसमें आप देखो हर एक चीज हम आपको इस तरह से प्लान को कैसे रीड आउट करना है, उस प्लान के पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह से आप करोगे, हर एक चीज यू कैन सी हियर, दिस इज हाउ वी ट्राई टू लर्न। ये सारे चीज में आपको, अगर G+3 रेजिडेंशियल बंगलो का प्लान है तो उसमें क्या क्या आएगा, बेडरूम आएगा, किचन, लिविंग, फोयर आएगा, क्या क्या आपको बीम का साइज रखना है, स्लैब का साइज आपको कितना रखना है, क्या क्या यूनिट कन्वर्शन रहेगा, इस लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, सो दैट विल हैव अ वंडरफुल नॉलेज। यू कैन स्पीक विद एनीवन टेक्निकली, एंड नॉट ओनली वन सिंगल प्लान। इसमें से आपको फुटिंग का लेआउट कैसे पढ़ना है, फुटिंग का ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर, सो दैट जब आप कोई साइट पे जाओगे you'll literally get the feel of that engineering, so that उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो सारे चीज आपको समझ में आ जाता है once you enroll in all these courses and all। ठीक है, फाइन। तो ये सारे आपके ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है। ये आपका फर्स्ट ड्राइंग है, जहाँ पे G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग कवर हो जाएगा। फिर विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद विल गो फॉर G+1 कमर्शियल बिल्डिंग का ड्राइंग, G+3 हॉस्टल बिल्डिंग का ड्राइंग, स्लोप एंड एसेंट्रिक फुटिंग का जो ड्राइंग है वो भी हम पढ़ेंगे। एसेंट्रिक फुटिंग मतलब क्या है, एसेंट्रिक फुटिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से आपको एसेंट्रिक फुटिंग को प्रोवाइड करने, कहाँ पे प्रोवाइड करने, दिस आर द टॉपिक्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर एक 35,000 स्क्वायर मीटर का एक पीबी का बिल्डिंग है, उसको हम समझेंगे। इंटीरियर के ड्राइंग्स को हम देखेंगे, लाइक रिफ्लेक्टेड सीलिंग का प्लान है, जिप्सम बोर्ड का है। प्लम्बिंग के ड्राइंग्स को भी पढ़ेंगे। आपको प्लम्बिंग के ड्राइंग्स वेरी फ्यू पीपल टीच यू, हम यहाँ पे आपको प्लम्बिंग के ड्राइंग्स भी पढ़ाएंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स। तो प्लम्बिंग वाला भी कवर हो जाएगा। विल ऑल्सो गो इनटू द इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स भी हो जाएंगे। फिर एयरपोर्ट का ड्राइंग, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी का बिल्डिंग का ड्राइंग है। ये सारे चीज हम यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड द अबाउट द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बिहेवियर ऑफ द बीम क्या होगा, फुटिंग का साइज आप कैसे डिसाइड करोगे, फुटिंग का डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है, वन वे शेयर क्या होता है, पंचिंग शेयर क्या होता है, एसबीसी ऑफ द सॉइल आप कहाँ पे यूज करोगे, एसेंट्रिक फुटिंग का डिजाइन कैसे होता है, ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद एक बार ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट वी विल गो फॉर लेवल 2। लेवल 2 में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वांटिटी टेक ऑफ एंड ऑल। ठीक है, तो क्वांटिटी टेक ऑफ में हम क्या करेंगे, वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पूरा हम प्लान लेंगे, उस पूरे प्लान का मैं एस्टिमेशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स एंड ऑल। इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग, रफ फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, फिर प्लिंथ बीम का होगा, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे टॉप ऑफ रूफ का एस्टिमेशन हो गया,
ये सारे चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस तरह से हम ड्राइंग सबको समझाएंगे एंड फिर इस तरह से पूरा ड्राइंग समझने के बाद विल ट्राई टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ एक्सेल शीट्स एंड ऑल। तो ड्राइंग साथ में रहेगा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे वन बाय वन विल सिट एंड डू ऑल द एस्टिमेशन एंड ऑल। तो ये सारे चीज हम पढ़ेंगे अपने एस्टिमेशन वाले कोर्स में। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी टेक ऑफ। तो क्वांटिटी टेक ऑफ में हम ये सारे चीज काम करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी टेक ऑफ होने के बाद नेक्स्ट विल गो फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल का कोर्स। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में विल ट्राई टू डू द बीबीएस ऑफ द एंटायर बिल्डिंग, फुटिंग का बीबीएस, फिर इसके बाद कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस। और जब हम पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज है एंड वन बाय वन हम इस तरह से पूरे फुटिंग का बीबीएस बनाएंगे वन बाय वन। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह से एक्सेल शीट आप जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे बनाने के लिए। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस तरह से आप एक्सेल शीट्स बनाते चले जाओगे वन बाय वन। यू कैन सी ऑल द एक्सेल शीट्स गेटिंग क्रिएटेड। आपको पूरे फॉर्मूलास हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे इंटरलिंकिंग करना है एंड ऑल। तो इस तरह से वन बाय वन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू सच काइंड ऑफ एस्टिमेशन शीट्स एंड ऑल। तो ये वाला आपका फुटिंग का रहेगा। इसी तरह से हम आपको राफ फुटिंग का हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉलम का हो जाएगा, डायमंड स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप, 4 लेग स्टीरअप हो गया, 6 लेग स्टीरअप, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके पास इस तरह से ड्राइंग्स आएंगे तो इसका सब आप स्टीरअप का कैलकुलेशन कैसे करोगे? नॉर्मल 2 लेग तो सारे लोग कर रहे हैं, बट व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ ये वाला स्टीरअप आएगा तो इस स्टीरअप का सब आप बीबीएस कैसे बनाओगे? तो इसका हम मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट। मैनुअल कैलकुलेशन होने के बाद सेम टू सेम हम क्या करेंगे? एक्सेल शीट्स पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक्सेल शीट्स में आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है एक्सेल शीट्स, सर्टेन स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है एंड वन बाय वन वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सारे आपके बीबीएस रहेगा, अगेन सारे आपके कॉलम के बीबीएस रहेंगे। फिर बीम का निकालेंगे, अगेन बीम का बीबीएस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द बीम का फंडामेंटल। तो ये पूरा बीम का ड्राइंग है। बीम का ड्राइंग के बाद वन बाय वन इस तरह से आपका पूरा ड्राइंग रहेगा। इन दिस ड्राइंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ बार्स आते हैं एंड देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस ड्राइंग्स एंड ऑल एंड देन इसका पूरा हम बीबीएस निकालेंगे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। ये सारे चीज हम यहाँ पे विल ट्राई टू स्पीक ऑन ऑल दिस थिंग्स एंड देन इस तरह से हम वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो ये सारे आपका बीबीएस वाला सेक्शन हो जाएगा। बीम का मैंने दिखा दी। इसी तरह से आपका स्लैब का निकालोगे, पूरा स्लैब का है, चेयर बार का हो जाएगा, स्टेयरकेस का हो जाएगा, फिर स्लैब वन वे टू वे का स्लैब है, लाइव प्रोजेक्ट है, बोथ साइड क्रैंक का बार है, गन बार, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो दिस इज बार बेंडिंग शेड्यूल। एक बार बार बेंडिंग शेड्यूल होने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे? विल कम टू द बीओक्यू एंड द रेट एनालिसिस। यहाँ पे हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कैलकुलेशन फाइंड करेंगे। एक्सेल शीट हम इस तरह से हम जीरो लेवल पे एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे ताकि जब आप कोई अलग प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करोगे, ठीक है, तो आप किस तरह से खुद का एक्सेल शीट्स आप बना पाओगे एंड सारे चीज विद इन अ वन सिंगल क्लिक यू कैन फाइंड द आंसर फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे चीज हम यहाँ पे ये वाला रेट एनालिसिस वाला पोर्शन में हम ये सारे चीज कवर करेंगे। फिर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर द बीओक्यू, एसओआर एंड ऑल। तो ये सारे आपका बीओक्यू का प्रिपरेशन है, किस तरह से आपको बीओक्यू का प्रिपरेशन करना है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, एसओआर को कैसे पढ़ा जाता है, ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो एक बार ये वाला भी पूरा होने के बाद अगर आप इतना बना लोगे ना तो आपका 30% ऑफ द चीजें जो आपको समझना था इन योर लाइफ दैट इज कवर्ड हियर एंड विद दिस एटलीस्ट यू कैन गो एंड फेस सर्टेन इंटरव्यूज ऑल्सो। तो ये वाला होने के बाद नेक्स्ट एक बिलिंग इंजीनियर का कोर्स है, तो बिलिंग इंजीनियर का कोर्स भी खत्म कर लेंगे एंड देन विल मूव टू द लेवल 3। लेवल 3 में हम आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराएंगे, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक कोर्स है, फिर एक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स है और एमएस एक्सेल का एक कोर्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आपका लेवल 3 में हो जाएगा। फिर लेवल 4 में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि आपको किस तरह से बेसिक का प्रोजेक्ट प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से आप कोई भी अगर मान लो कल प्लानिंग इंजीनियर बनोगे, ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनोगे तो आपको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बेसलाइन शेड्यूल क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, ये सब रिलेशनशिप आपको कैसे देना है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। दोस थिंग्स विल कवर इन द बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स। फिर हम एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स करेंगे। फिर अभी प्राइमवेरा 1 महीने के आसपास आ जाएगा, प्राइमवेरा हम इसमें अपडेट कर देंगे एंड फिर विल गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट इज पार्ट 5, दैट इज लेवल 5। यहाँ पे हम प्री इंजीनियर बिल्डिंग, जो अभी तक हम बस आरसीसी का बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर का भी। तो इन द स्टील स्ट्रक्चर विल ट्राई टू कवर सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल। इस तरह से हम बिल्डिंग्स को कवर करेंगे, ऑल दिस आर योर स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। तो इस तरह से बिल्डिंग को हम आपको पढ़ाएंगे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे इन चीज़ों को किया जाता है, प्रैक्टिकली साइट पे कैसे इसका इरेक्शन होता है, ये सारे चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाला हूँ।
हर एक चीज का ड्राइंग को कैसे रीडिंग करोगे, ये सारे चीज वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। अब ये सारे आपके स्टील के स्ट्रक्चर, ये सारे आपके मेन बीम है, ये सारे आपके जॉइस्ट बीम से, ये सारे आपके कनेक्शंस होते हैं। ओके, कनेक्शन का डिजाइनिंग, ऑफ कोर्स डिजाइनिंग विल नॉट अंडरस्टैंड, विल कॉन्सेंट्रेट इनटू द एग्जीक्यूशन का पार्ट। ये हर एक चीज में आपको इसका एग्जीक्यूशन समझाऊंगा। एंड आजकल इसका मार्केट में अच्छा डिमांड भी है स्टील स्ट्रक्चर का एंड ऑल, सो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग एंड ऑल। तो इवन इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली आप अच्छी जगह पे, अच्छे पोजीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा पीईबी का फंडामेंट आपको इंडिया में पीईबी का कोर्स कहीं पे मिलने वाला नहीं है, तो दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड। आल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पीईबी ड्राइंग्स एंड ऑल, हाउ टू रीड द सॉइल रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे, मटेरियल का एस्टिमेट आप कैसे करोगे। अगर नॉर्मल आप एस्टिमेशन तो करोगे, पर स्टील स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, स्टिफनर का क्वांटिटी कैसे फाइंड करोगे, ये सारे चीज हम करेंगे अपने इसी कोर्स में, पीबी वाले कोर्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर पाइप ब्रेसिंग क्या होगा, वेयर हाउस, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ आई विल शो यू फ्यू इमेजेस आल्सो। ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली साइड से पढ़ा रहा हूँ, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को हम कवर करेंगे। सो दिस आर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वेयर आई विल बी टीचिंग यू। तो ये सारे चीज आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सारे आपके बिल्डिंग से, ये सारे आपके कॉलम से, बीम से, ओके, फिर यहाँ पे गटर्स आएंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे वन बाय वन। दैट व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली ये सारे चीज करने के लिए ना हमें एक साल, 1.5 साल लग जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिनिश करने के लिए। ऑल दोस थिंग्स प्रैक्टिकली मैंने साइड से कवर करके आपको हर एक चीज मैं आपको ऑनलाइन में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, सो दैट यू कैन लिटरली गेट द। मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखा दूंगा यहाँ पे, विल शो यू वन मोर स्ट्रक्चर हियर। देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका पीवी का स्ट्रक्चर है। सो इफ यू सी हियर ऑल दिस आर योर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एंड ऑल। सो अगर मैं इसको थोड़ा आगे करके जाऊँ, सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो आपको दिख रहा ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट को, एंड दिस इज हाउ वी वेंट। ये सारे हमने एक्सकवेशन किया वन बाय वन, सेंटर लाइन मार्किंग, फिर उसका हम कॉलम करेंगे। कॉलम करने के बाद कॉलम के ऊपर आपका क्या आएगा, फिर आपका राफ्टर्स आएंगे। ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे, सो दैट यू हैव अ वंडरफुल नॉलेज प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। और ये सारे चीज 25-30 मिनट का वीडियो है, 34 मिनट्स का पूरा वीडियो। पीबी का रिसोर्ट बिल्डिंग है, फिर अदर बिल्डिंग का भी है, ये आपका एक और बिल्डिंग है। ये सारे आपके प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं। ओके, ऑल दिस सारे ये आपके पफ पैनल्स रहेंगे, ये सारे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स हैं। सो दैट डेफिनेटली विल हैव अ वंडरफुल नॉलेज आल्सो फ्रॉम दिस कोर्स। अब जितने भी मेट्रो स्टेशन सब देखोगे आजकल, ये सारे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स ही होते हैं। सो दिस आर द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द पीबी वाला कोर्स एंड ऑल। तो आप बस इमेजिन करिए, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एट द एज ऑफ 22, हमको तो अभी 8-9 साल के बाद ये सारी चीज पता चला, इसके कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। डेफिनेटली विल हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड ऑल थ्रू दिस कोर्सेज। तो ये सारे चीज कोर्स रहेगा। द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज एक्चुअली 8,000 का है। अभी हमारा ऑफर स्टार्ट तो हो चुका है, मेनी स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स आल्सो। देखो ऑलमोस्ट 288 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स, जहाँ पे people have got good benefits and they are able to understand all these things and all. Definitely if your people are really interested, मैं आपको कुछ reviews दिखा दूंगा students का, so that you will also understand to what level you are going to learn all these things and all. Okay, one more thing is why you should enroll in the courses. सो डेफिनेटली जब आप कोर्सेस में अगर आप एनरोल करोगे, वन एडवांटेज इज ना, जो चीज अगर अगले आप 3 से 4 साल लेने वाले हो, वो डेफिनेटली अगले 5-6 महीने के अंदर आप सीख लोगे। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपको सीखना तो बहुत है, सब कुछ तो आपको मिलेगा ना इस साइड पे, आप इस तरह से जा रहे हो, तो कोर्सेस लेने से क्या होगा, विल एक्चुअली मेंटर क्या एग्जैक्टली आपको क्या सीखना है, क्या नॉलेज गेन करना है, किस फील्ड में जाना है। तो दैट टू बी द वेरी मिनिमम कॉस्ट, सो दैट आपको ये जो एक लाइफ है ना, एक राइट ट्रैक पे जा सकता है, अगर इफ यू रियली डोंट नो ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, फाइन। So you can see this is one, he is one of my student. Hello sir, good morning. Yesterday I directly walked into a construction site of a G+33 story in my locality and asked them if they have any requirement for the engineer. First site engineer ने उसका interview लिया, फिर senior site engineer उसका interview लिया, and told to join from that moment only. Thank you sir for all your guidance and support. Your teaching have really prepared me for this opportunity. So these are the kind of reviews the students are giving, so that होगा क्या, आपके पास confidence भी रहेगा, and you can literally go and speak with anyone technically. Sir, I have enrolled in a construction mastery in 6 months. Just wanted to know how to get a, okay, ये तो छोड़ दो। First of all, thank you for getting so much this courses. You are boon to student like us. तो ये सारे students देखो, ये same student एक और interview में गया था. Again, he got selected there. Out of 6 candidates, only one. He was the only one who got selected there. ठीक है,
So you can see all these reviews given by the students. I'm fortunate to take your courses and I'm privileged to convey that I've been selected for a global opportunity to work in Australia as a civil project engineer. Okay, I purchased this course from starting sir, and from your support and your excellent content, now I'm a project engineer. So इस तरह से आपको जितने भी रिव्यूज आपको देखना है, you can check out all the reviews and all. ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल किया था. आशुतोष पटेल he has taken he had enrolled in my course. उसने अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स भी लिया है. Okay, and he is also planning to go to Australia. Okay, and these are the students, these are the reviews given by the students and all. Really comprehensive course and not just any marketing course. तो इस तरह से जो भी आपको रिव्यूज दिख रहा है ना, all these are the reviews given by the students and all. Thank you so much for your wonderful videos. Footing marking is done sir. तो students through online only I'm going to teach them all these things. वो भी practically मैं साइड से पढ़ाता हूँ, so that people are confidently able to do all these things. I got a job abroad in my first interview. Now I'm in Saudi Arabia. Thank you so much sir. Your work is awesome. Okay. तो ये सारे students का reviews आप देख सकते हो. Our site engineers from contractors side need this course. I suggested them. After attending your 6-month construction mastery course, even the layman will become a professional civil engineer sir. ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है. फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन दुबई, ओमान एंड ऑल. तो ये स्टूडेंट को जॉब भी मिला था दुबई में. एंड यू कैन सर, मैंने बहुत से कोर्सेज लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त. थैंक यू सर, मेड दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर अस. तो एक स्टूडेंट को एलएनटी में मिला था. So you can see he has recommended more than 50 plus people. This course helped me for securing my job as a site engineer, as most of the questions were from this content. So you can see all these reviews given by the different people. I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course. Fortunately, while searching, I got to know about your course and all. So I gave interview on Saturday. Today I got selected, sir, in site engineer job. Okay. So these are the reviews given by the students and all. तो आप इसको देख सकते हो. एंड जितने भी कोर्सेज में अगेन यू सी फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स ये साइट पे काम कर रहा था, वाज वर्किंग फॉर 20,000 रुपीज़ का सैलरी. फिर उसने अच्छे से वहाँ पे मेहनत भी किया, मेरे कोर्स भी लिया था इसने. अभी उसको एक इंटीरियर फिट आउट का कंपनी में जॉब मिला है, 29,000 का सैलरी है उसको. सो दिस इज हाउ पीपल ट्राई टू लर्न, दे ट्राई टू गो टू बेटर पोजिशन एंड ऑल, राइट. सो अगर आपको इंटरेस्ट है, डेफिनेटली आप मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए एंड यू विल गेट ऑल दिस कॉन्टेंट इन माई सिविल ब्रेन्स ऐप. या अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. Sir, is this course available on Udemy? Yeah, all my courses are available on Udemy. Only the thing is, you have to take it as an individual course. In my app, you'll get a combo of all the course. But in Udemy, you have to buy each courses. You have to buy each courses. That is how it is. So almost 7 students are online. अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, आप पूछ सकते हो. So I'll be there to help you out. आज मेरा AutoCAD नहीं चल रहा है, so I would not be in a position to open any, ये वाला. तो इस तरह से जो भी after attending your 6-month construction mastery course, the layman can become a professional civil engineer. ठीक है, चलो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली डालिए यहाँ पे क्वेश्चंस. अदर देन दैट आई थिंक विल टेक वन मोर दिस थिंग. एक ड्राइंग है मेरे पास, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ड्राइंग. तो ये वाला एक ड्राइंग है. इट्स अ ड्राइंग ऑफ G+7 स्टोरी का बिल्डिंग. तो ये पूरा कॉलम का लेआउट है. ठीक है, तो वन बाय वन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ द कॉलम. तो ये सारे कॉलम्स है यहाँ पे. ठीक है, C4 कॉलम, C3 कॉलम, C3 कॉलम, C3, C3, C9. तो ये सारे आपके कॉलम्स है. C4, C1, C7, C7, C12. ऑल दिस आर द कॉलम्स व्हाट यू हैव. ठीक है. अब यूजुअली अभी ये G+7 स्टोरी का बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली इसके कॉलम के साइज बहुत ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज इट कम्स, ये आपका एक स्कूल बिल्डिंग है. सो अगेन इफ यू सी हियर, C1 कॉलम आपका 12/30 का है, C2 कॉलम आपका 12/36 का है, तो लगभग 3 फीट का कॉलम हो जाएगा. 12, 24, 36, या 3 फीट. अगेन C3 कॉलम आपका 12/36 का है, C4 आपका 12/30 का है. इसके बाद
C5 कॉलम 16/36 का है, C6 आपका 12/30 का है, 12 इंच बाय 36 इंच, 16 इंच बाय 36 इंच, 12 इंच बाय 24 इंच, 12/24, 12/36। तो ये सारे आपके कॉलम के डायमेंशन है, क्योंकि G+7 स्टोरी का बिल्डिंग है एंड ये आपका स्कूल बिल्डिंग है, तो कॉलम के साइज थोड़े हैवी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर अगर आप वही चीज अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हो देन डेफिनेटली वो आपको 9/12, 9/15, 9/18 के कॉलम ही मिल जाते, बट हियर यू कैन नॉट सी एनी 9 वाला कॉलम, और आपका मिनिमम 12 इंच तो है ही यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक और आपको टिपिकल कॉलम रीइंफोर्समेंट डिटेल्स दिया जाता है। तो ये सारे आपके मेन रीइंफोर्समेंट है, 1 2 3 4 5 6 आपका मेन रीइंफोर्समेंट है। एक आपका मेन रिंग आएगा, फिर आपका एक लिंक आएगा बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका मिनिमम कभी भी आपके जो हुक लेंथ होता है ना, आपको ये मिनिमम कभी भी 75 mm ही रखना होता है प्रैक्टिकली, दैट इज हाउ इट इज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको यहाँ पे एक आपको जनरल ड्राइंग दिया जाता है। इस जनरल ड्राइंग में दे आर गोइंग टू टेल यू कि उसमें ना क्रॉस सेक्शन कैसे रहेगा, ये पूरा आपको फुटिंग का डेप्थ रहेगा, ये आपका पीसीसी रहेगा, एंड ये जो आपका रहेगा पूरा डेवलपमेंट लेंथ, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन होता है पूरा। तो ये आपका मिनिमम 45 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होना चाहिए, और इसमें से जो एल वाला पोर्शन है वो आपका मिनिमम 45 आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या है, या ये सारे कॉलम के लैटरल टाइस है, एक कॉलम के रीइंफोर्समेंट है। एंड फिर आपको इस तरह से आपको लैपिंग देना पड़ेगा, अगेन लैपिंग आपको कभी भी स्टैगर्ड लैपिंग करना पड़ेगा, तो ये आपका लैपिंग यहाँ पे आएगा। एंड जो आपका लैप लेंथ है वो मिनिमम 45 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपको होना चाहिए। एंड जब आप कॉलम को टर्मिनेट करोगे लास्ट फ्लोर में, आपको ऐसा स्ट्रेट वर्टिकली नहीं छोड़ना है, आपको कभी भी इस तरह से अगेन मिनिमम 12 इंच एक एक फीट का आपको इस तरह से एल मार के अंदर की तरफ आपको लेना पड़ेगा। तो दिस आर द कॉलम ये वाला दिया है reinforcement, along with that many other details also will be given, but right now मैंने सिर्फ एक कॉलम का ही ओपन किया था, so that is how it is। apart from that यहाँ पे आपको जनरल डिटेल्स दिया जाता है कि आपका जो ग्रेड ऑफ द स्टील है Fe500 है, एंड फुटिंग का कवर आपको 50 देना होता है, कॉलम का कवर आपको 40 देना होता है, एंड फुटिंग का जो बीम्स है ओके 50 देना होता है, वॉल 25 mm का देना होता है रिटेनिंग वॉल के लिए, प्लेन बीम 25 mm देना होता है, और यहाँ पे 220 मैट्रिक टन मतलब 220 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का एसबीसी मिला है एट अ 14 फीट फ्रॉम द एनजीएल लेवल। एंड ये जो बिल्डिंग है आपका ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर प्लस एक टेरेस, टोटल आपका 7 स्लैब आएंगे, सो इट्स अ G+5 स्टोरी का बिल्डिंग है, राइट। सो दिस इज हाउ द एंटायर ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल, एंड आपको इस तरह से ड्राइंग सब आपको पढ़ना आना चाहिए, विच इज कवर्ड इन माई ड्राइंग रीडिंग का कोर्स एंड ऑल, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज फाइन। Sir, can we get this drawing soft copy? See, if you enroll in my course, I give, because if I randomly give, it's of no use. आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या देख रहे हो, because वो पूरा एक सेट आपको देना होता है, फिर आपको समझना भी होता है। So I always suggest कोर्स में एनरोल करिए, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको समझोगे फिर आप उसको देखोगे तभी आपको ये सारी चीज समझ में आएगा। ओके, दैट इज हाउ इट इज। या ओके, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, या ओके, फाइन। ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है, फिर क्या करेंगे बताओ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। या कॉलेज, सर कॉलेज इंटर्नशिप कैसे अप्लाई करें इन बिग कंपनीज, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वॉच दैट वीडियो कम्प्लीटली। वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट आपको कहाँ पे करना है। अगर लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, now tell where you want to apply, whether you want to apply internship in Delhi, let's say in Gurgaon or Greater Noida or Noida, हो गया। तो आपने सिलेक्ट किया, फर्स्ट आपने प्लेस सिलेक्ट किया, नेक्स्ट आइडेंटिफाई आपको किस कंपनी में करना है, आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। आपने दोनों आइडेंटिफाई किया, नाउ जो भी कंपनी में आपको करना है उनके वेबसाइट में चले जाओ, वहां पे क्या होगा एचआर का आपको मेल आईडी मिलेगा, तो एचआर को एक आप लेटर लिखो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ इंटर्नशिप इन योर कंपनी, सो इस तरह से आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एंड देन जस्ट अटैच अ रेज्यूमे ऑफ योर्स। ओके, बस आप उसमें आपको वहां पे क्यों करना है,
आपका क्या इंटरेस्ट है, जस्ट राइट अ लेटर टू देम। इस तरह से आप 3 4 5 6 10 12 कंपनी को अप्लाई करें, कहीं ना से आपका एक रेस्पॉन्स आ जाएगा एंड यू कैन गो फॉर द इंटर्नशिप। दैट्स हाउ इट इज। तो आप जब तक लोगों को कनेक्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ आप अगर घर बैठोगे और सोचोगे कि मेरे को इंटर्नशिप मिलना है, कोई तुम्हारे घर में आके इंटर्नशिप नहीं देने वाला है। यू शुड गो टू द कंपनीज एंड इन टुडेज वर्ल्ड यू पीपल आर प्रेटी लकी दैट बस you have a internet, you have LinkedIn account, just connect with the people. At least in our time it was very difficult। हम तो एटलीस्ट ऑनगोइंग जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जाके हमें अप्लाई, ऑफ कोर्स उस टाइम पे इंटर्नशिप का इतना कुछ क्रेज नहीं था 2015 में, but today you can do whatever you want to do with the help of internet। just you have to you should know how to speak with someone, you should know how to connect with someone। अगर ये दो चीज अगर आपको आता है डेफिनेटली यू कैन टेक इंटर्नशिप एनीवेयर। ठीक है, आपको इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। whatever companies you want and whatever internship you get, just do that internship, it will help you a lot। ठीक है उदयराज? या और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? so let me share this in my group ना। if anybody has any questions definitely ask it। ओके क्लियर है आप लोगों को? ओके ओके सर, या डन। तो दिस इज हाउ sir, which is the best site engineer or PV structure? See, there is nothing like that here. I mean, PV and all, what happens, very few engineers are there in PV। RCC everybody can do, and also what happens, if you go towards the local site and all, normal mason and all will do if it is a G+1 G+2 building। PB you require a good engineer, a good site engineer is required, and today there are a lot of construction which is happening in the PB sectors and all। So definitely in PB you'll have a better opportunity। One second is there is a lot of scarcity of PB engineers। RCC, if you take 10 engineers, 8 people are aware of RCC construction, but only 2 people know PB construction। So that is how it is। So always better, you can look for PB also, but it should be in the good company। I have explained all these things in my course। If you enroll in my PB wala course, in my PB wala course I've explained you how to apply for such companies and all, each and everything I've explained in my course। I'll just open it। एक मिनट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? I'll just go to my screen। या तो यहाँ पे देखो, see here, so there was the fastest PB construction with the video which I made recently। It was the fastest construction which happened। It's a world record। Okay, all these are your pre-engineered buildings and all। So definitely this particular company called 𝗖𝗵𝗃 is definitely going to get a lot of projects now। And if you just target this one company in the next 1 to 1 month, 1 to 1.5 month, definitely you can crack a job in this particular company। The reason why you can crack is because since they have done a world record, definitely a lot of people will be attracted towards that company। They'll get a lot of opportunities। Since those people are going to get a lot of opportunities, definitely they'll get more projects। If they're getting more projects, they require more people, then definitely someone with the knowledge of all these things which is explained in my entire course, it's almost a 22 hours of the content। You'll not get such kind of content anywhere on YouTube, or any offline training or online training will not be in a position to explain you all these things। That is the level of teaching what I have done in my entire course, where I have taught you each and everything here। So definitely I'll show you one more thing, what is the scope of this and all। So I told you many times, so these are the kind of structures we'll try to understand and all। Okay, so you can see these are the kind of structures, we'll speak on all the structures about pre-engineered buildings and all। And also I've explained you how to apply for such companies and all। First let me show you which are the there are many companies, you see the kind of projects, these are the kind of PB projects that you get to work on। And if you work on 1 or 2 projects, definitely these are the projects in UAE, Tanzania, UAE, India, then you have this in Kuwait, you have this in Qatar and all। So these are the opportunities that will open up for you। And these are the companies, Zamil Steel, Kirby, Everest, 𝗖𝗵𝗃 is the one which I'm speaking right now, Hallis Blue। In this way you get a lot of companies, you can just apply for such companies। And also you see here, you just have to read out this one point, like I mentioned a few days back, I was not few days back, almost 2 months back, I attended one webinar on this। So a person having 15 plus years of experience, he told that training and development, another major point of concern is the acute shortage of the PB field oriented site engineers, right? So there is a lot of engineer, I mean there is a scarcity of PB field oriented, because here you should understand the sequence of constructions and all।
You cannot randomly do the execution of these projects. There's something called as plan. There's something called as this thing, vertical bracings. All these are the vertical bracings. So you have to do the executions accordingly. So these are your vertical bracings and all. Again, then there's something called as plan bracings. These are your crane, this thing, EOT cranes and all, crane girders and all. So this is called as your flange bracings and all. So there is certain concepts and all. First, you have to start the execution from the braced bay. This is called as a braced bay. After the braced bay, you will start. I mean, this from here you'll start the first column. Second column you lift. You'll put all the girds and all, and then you'll put the purlins and all. So this is the kind of executions that you're going to do. Definitely, it has a good this thing future. Okay, fine. So what should a MTech in structure engineering do to get a MTech level job having experience only as a site engineer for one? What is that? What should a MTech in structure engineer do to get a MTech level job having experience only as site engineer? Like Abhijit Singh, have you done your MTech or you are about to do? Sir, do you teach preparing the format of bill in Excel in your course? The format of bill, what is there to teach? The format of bill and all. See, actually, I don't have a course on billing engineer. So billing engineer is taught by a different sir in my app. He has covered those things and all. Preparing a format and all, you don't require any skills here. I mean, each company will have their own format. You just have to copy paste and all. So there is nothing much to teach in that. If you know to operate Excel, you can prepare those things. MTech done. No, yeah, okay. Abhijit Singh, you call me tomorrow. Like I want to know what exactly you want to do. I did not understand your question. I'll give you my number 8095128107. You can WhatsApp me tomorrow. I'll come over the call and I'll speak to you. Okay. Okay. Fine. So any other questions? Sai Kiran, yeah, your question is answered. Any other questions anybody has? You can ask, else we can stop this live session. Okay. So anybody has any questions to ask? You can ask me. So anybody has any questions to ask? Okay, no question. So PB is something again for people those are live now. I'll again explain. What you can do is you can download my Civil Brains app. There are very good courses in my entire app and all. So we're running a good offer right now. All these courses instead of this is instead of 1,500 you can buy it at 1,000 rupees. This particular instead of 2,500 you can buy it 1,999. This course instead of 1,500 you can buy it for 999. This course instead of 8,000 you can buy it for 6,999, and you get all my future courses also, and you get a lifetime access. This includes all my courses that you're going to get, and it will be the best investment that you'll ever do in your life. And this is the last offer in this particular year. We have another few days left for the year to end. From next year onwards, again, this course price is definitely going to increase. Now this is the last offer that we are running, and so many students have enrolled in this course for the past 3 to 4 days. Yeah, there are, of course, now I cannot show that. There are a lot of students who are enrolled in the course. So recently you can enroll in this course. Almost 288 students have enrolled in this course. And yeah, so 29 November, right? So let me go for a date one. So 18th May, 17 December. You can see these are the students those have enrolled in the recently. Okay, 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃, Sahu, DR, Pavan, Uppala, Mahesh. All the students have enrolled today. Like 17 December, 2 students have enrolled. 16 December, 15 December, 15 December. All this, because since we are running the offer and these people know the importance of the course, and all these people have already seen my lectures and all. Definitely, this would be the last time that you will get this particular course for such a less price. After that, definitely this price will go back. If you have seen my lectures before, the course price was almost for 10,000. Since many students requested me, I brought it down for 8,000. Since again many students told me, sir, give some offer, so I'm just reducing some price and giving it for 6,999. You have a wonderful knowledge to all these courses, and we are adding a lot of content in this. And you can see last time I mentioned, I'm working on this new course also. That is, we'll try to cover a lot of topics, so that definitely in future you people can go to the better positions and all. We're trying to add a lot of contents and all. These were the things which was not added in my previous course and all. Okay, like we'll also speak on what are the stages of construction. There's something called as pre-construction stage. Then we have post construction stage. Then we have post-construction stage. And in construction project, we have these things: planning, designing, procurement comes in the pre-construction. Construction activities like excavation, plumbing will come. Post-construction will come about final inspection, close-out project and all. Then we'll try to understand what is pre-construction. We'll try to understand what is construction stage.
will understand what is post construction stage and all my previous PPT what I had done, I'm completely changing it, and this is a kind of a new PPT that I'm preparing and all. So we'll definitely have a wonderful knowledge, and most of the things, whichever things I have missed, I've added all those things in my upcoming courses and all. Okay, all the things we'll try to speak different diameters of the bar, each and everything practically we'll try to speak on all these topics and all. Okay, so all these things definitely you're going to get in the same course. You need not pay me extra. Once it is updated, everything will be reflected in your course and all, and definitely you'll have a good knowledge. And there are certain good videos like about basics of vastu planning, what are the list of code books and all. So in this way, a lot of topics I've added in my courses and all. So somebody who's interested, you can download my Civil Brains app from Play Store, and this will be a last opportunity that you're going to get in this year. Okay, so if there is any questions, do ask me. Yeah, so do billing engineer need to stay inside for 8 hours? No, say billing engineers will be usually working in the office only. They hardly come to site. When I say hardly, maybe once in a day they may come, or whenever certain measurements are to be checked, they have to come to the site. But it will be mostly an office job for the billing engineer people. They don't have to be on the site whole day. Okay, only site engineers will be there on the site for the whole day. If it's a senior site engineers and all, rest project managers and all, they come once in the morning and once in the evening and all. That's how it is. Instead of going, yeah, billing engineer is good. It will be always like, work as a site engineer. After site engineer, go for a quantity surveyor. From there, move towards the billing. After billing, you can even learn about contracts, tender and all. From there, go for the planning engineer job and all. So this should be a hierarchy. If you go in this direction, definitely no one can stop you, and you'll have a wonderful knowledge. You can go to the better positions like, manager, senior site manager, project manager, DPM, project manager and all. Of course, it requires a lot of efforts and all. At least 1.5 year of time you should put it on the site. Yeah, see, whatever you people have paid for the course, nothing is removed. Only the thing is that site, this course is there. No, Primavera I have removed because there are few lectures which are pending. So I didn't add it. Primavera is already there with me. By the end of this month, I'll be adding the Primavera. That's it. Nothing is removed. If there is only the thing is AutoCAD course and all I have removed. I'm not going to give AutoCAD in this because I have a separate course. But all those people already enrolled in my course before, then definitely I'll give you access to that. But new people, and that is how it is. Okay, that's how it. So if you have taken any course and if any access has gone, you can just WhatsApp me. I'll give you access. That's not a big issue because all my courses will come with a lifetime access. So if any courses is missing from your profile, sometime there will be a glitch in the system and all. You can just WhatsApp me. I'll give you access to the course. That is not a big issue. It's not like we'll take a money and not give you a course and all. That doesn't, help me, nor it will help you. Okay. For girls, it's always better go for a QS, go for a billing, go for a planning, go for interior designing, BIM and all, structure designing. They can go. Okay. Any other questions? There are 12 people on. There are 12 people online. So if anybody has any questions, you can ask me. And definitely download my Civil Brains app. This will be the last offer which we am going to run. And after that, all the course prices will increase. Definitely, the construction manager master will go back to its original price of 9,999, and we'll be adding a lot of new contents and all. We're working on that. I have shown you all these things. So these are the things which I'm working on. Will make a very good PPTs for you people, and a lot of new concepts, lot of things we are going to add in the courses and all. Our compared to a previous course, we are making a better course this time, adding a lot of new contents and all, and we'll also try to cover the interior parts and all. But it will take time. I need at least two to three, at least 2 months of time, and yeah, that's how it is. So definitely after this course, I'm damn sure that you people have to start rejecting the job. Somebody is offering you 15,000, 18,000 ka salary. If somebody is offering you, let's say 15,000, 12,000 ka salary, just have to ignore telling that to the level of knowledge what I have, I can go a better position. So that is a level of thinking I'm doing. That is a level of content I'm trying to add. हेलो सर, मैंने आज ही कोर्स बाई किया है बट ओपन नहीं हो रहा है ना. अरे तो तुम वहां पे मैसेज करो ना, व्हाट्सएप यहाँ पे मेरे ऐप में मैं चेक करूंगा, आप मैसेज करो. जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ओके चैतन्य, अगर आपका नाम, जो भी आपका नाम होगा, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करिए, आई गेट, ओके आई गेट फ्रॉम देयर, आई गिव यू एक्सेस, डोंट वरी। एक्सेस सारे को मिल जाते हैं, सारे लोगों को एक्सेस मिल जाते हैं, डोंट हैव टू वरी एंड ऑल। और कभी कभी अगर किसी का नंबर मिस हो जाता है तो डोंट वरी, मैं ही करूंगा, बात भी मैं ही करूंगा ऑनलाइन पे, आपका प्रॉब्लम भी मैं ही सॉल्व करूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है, या दैट इज फाइन। आपका कोई प्रॉब्लम, देखो इनको सब एक्सेस मिला है, देखा अभिषेक हेगड़े ने कोर्स लिया था, यस गॉट एक्सेस, यहाँ पे उसका अकाउंट में कोर्स दिखेगा, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट मैसेज मी देयर, मे बी नाउ इट्स ऑलरेडी 8:16, when I'm free after 9 o'clock I'll just check, आप मेरे को यहाँ पे एक मैसेज डाल के रखो, ठीक है, that's it, fine। Any other questions, any people? There are 8 people online, so if anyone has any questions ask me, okay, else we'll stop this live session, ठीक है। Which is office jobs in civil air? I already made a lot of videos on that. What you do is go to YouTube, मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, स्टॉप दिस शेयरिंग, मैं आपको बता दूंगा। Yeah, I'll show you now. See, for office jobs, come here. यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, ठीक है, ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन ऑफिस जॉब्स, वेयर इज दैट ऑफिस जॉब्स, दिस वन, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए मेरे चैनल पे। कौन सा वीडियो है, या ये वाला वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो, द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसमें आपको मेरा सारे, या आई एम शेयरिंग इट वन सेकेंड। या दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव टू वॉच, ठीक है, इसको देख लीजिए, आपको पूरा ऑफिस जॉब के बारे में पता चलेगा। सर इन योर कोर्स विच कंटेंट अवेलेबल रिगार्डिंग ऑफिस जॉब, अकॉर्डिंग, see it's not like that, it's not directly, don't jump to office jobs and all, फर्स्ट स्टार्ट विद द साइट, कुछ नहीं होगा, एक साल एटलीस्ट साइट पे करिए, चीजों को समझो, देन उसके बाद गो फॉर क्वांटिटी सर्वेइंग, गो फॉर प्लानिंग इंजीनियर का जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स, वो जो भी है आपको मेरे कोर्स में मैंने कवर करके दिया, इसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ऑफिस जॉब एंड ऑल, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, क्योंकि आप प्लानिंग इंजीनियर इज ऑफिस जॉब, जब तक तुम साइट पे काम नहीं करोगे क्या प्लानिंग करोगे, तो इट हैज टू गो इन अ सीक्वेंस, डोंट जस्ट रन बियॉन्ड द ऑफिस जॉब्स एंड ऑल, एक साल मेहनत करो, कुछ नहीं होने वाला है, सो आफ्टर दैट गो फॉर ऑफिस जॉब, इस कोर्स में वो सारे चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। सर 6 साल करियर गैप है, क्या मैं एक अच्छी शुरुआत कर सकता हूँ? 1.5 ईयर जिस फर्म में वर्क किया है वहां से मुझे कोई एक्सपीरियंस प्रूफ नहीं मिला, वो एक्सपीरियंस प्रूफ नहीं चाहिए, तो रितेश गुप्ता व्हाट यू डू इज, देखो यार मैं आपको ऐसे डायरेक्टली सजेशन नहीं दे पाऊंगा, आई विल गिव यू माय दिस थिंग, व्हाट्सएप नंबर 8095128107, मेरे को आप व्हाट्सएप करके रखिए, मैं कल आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो कल आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, आई स्पीक टू यू ओवर द फोन एंड आफ्टर दैट विल डिसाइड, क्योंकि आई वांट टू नो व्हाट यू हैव डन, 6 साल का गैप में आपने क्या किया, आपको आगे क्या करना है, आपका एज कितना है, आई शुड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ओनली देन आई कैन गाइड यू, ओके। सो आई गिवन यू माय नंबर, व्हाट्सएप में टुमारो आई विल स्पीक टू यू। सर मेक वीडियो ऑन, अरे क्यूए किसी के ऊपर ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स, कंटेंट्स इज, मेरे पास कोई प्रैक्टिकली साइट का मैंने टेस्टिंग वाला सब वीडियो नहीं बना के रखा है क्यूए किसी के रिगार्डिंग, मे बी इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू डू दैट, बिकॉज मेरा भी एक लिमिटेशन होता है ना, आई कैन नॉट, आई इट्स नॉट दैट मेरे को सब कुछ आता है, वट एवर बेस्ट नॉलेज आई हैव आई विल ट्राई टू टीच, कुछ चीज आप साइट पे जाके सीख लोगे, सो दैट्स हाउ इट इज, बट क्यूए किसी के लिए जो भी आपको वर्क मेथोडोलॉजी चाहिए वो सारी चीज मैंने अपने साइट इंजीनियर का कोर्स में कवर किया है, इफ यू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स and if you go to the content part and if you come to this Hindi language,
इफ यू कम टू माय सेकंड वाला एडवांस साइट इंजीनियर, तो यहाँ पे आपको एक लेक्चर दिख रहा है, क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क मेथोडोलॉजी, ये सारे चीज मैंने कवर करके रखा है। वर्क मेथोडोलॉजी सोलिंग का आपको कैसे करना है, ये सारे थियरीज रहेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू, जो जो चाहिए आपको एक्सप्लेन किया मैंने, दैट इज इनफ। बट आई डोंट हैव अ क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, आरसीसी वर्क, पेंटिंग वर्क, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सारे चीज मैंने किया है। बट इट्स नॉट अ स्पेसिफिक किया किसी का कोर्स हो, मेरे पास स्पेसिफिक कोर्स तो नहीं है, बट दिस आर द थिंग्स व्हाट आई हैव टेकन। No, if you have taken directly 𝗖𝗵𝗃𝗃, if you have taken site engineer course, go for quantity estimation course, go for drawing reading ka course, go for basic project planning ka course. Only then come for a PB ka course. Don't just keep on jumping from the courses, because to understand the ye wala course, what is that? What is that? PB ka course, at least I expect that you should have site execution knowledge, estimation knowledge. You should know how to read the drawings and all. If you don't know all those things, don't enroll in PB course. Last time I told you for 𝗖𝗵𝗃𝗃, directly enroll in this construction manager mastery course. We are running an offer, and just give me 3 to 4 months. You'll have good knowledge, then you can apply for any jobs. Okay, don't directly jump for PB course. It will go beyond your this thing level of thinking. It's not easy, because that requires a lot of understanding from RCC. Sir, phone कॉल करना है या व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, यू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, छोटे आप एक 2-3 लाइन में लिखे। कल मैं आपको 11:30 के बाद आई विल स्पीक टू यू, ठीक है सर? हाउ अ फीमेल कैन स्टार्ट अ करियर इन सिविल? सी, फॉर फीमेल इंजीनियर, फॉर फीमेल इंजीनियर्स, you can work as a structural design engineer, you can become a quantity surveyor, you can go for a billing engineer job, you can go for a planning engineer job, you can go for a BIM job, you can become interior designer. These are options that you have. How to start a career? You should have, I think Muskan, I think you have taken my site engineer course, estimation and drawing reading. I think you're the same person. Okay, so no problem, you finish my course. Okay, apart from that, you just have to apply for the jobs. You just WhatsApp me on my number is already available with you. Just WhatsApp me. I'll just guide you. Else I'll take a separate session. I'll explain you how it has to be applied. Because in Hindi I make a lot of videos. So if you're comfortable in Hindi, then you can watch my Hindi channel videos where I've explained all those things. Else I can take a Zoom session. I'll explain you what has to be done. Civil engineering with computer application का न्यू ब्रांच जो हमारा ब्रांच हम सेकेंड ईयर में है, तो उसको क्या किस डायरेक्शन में वर्क करें? Muskan, but we don't have exposure in terms of site. See, if you have enrolled in my site execution course, I'm damn sure the level of knowledge what I've given in my course, even if you go and work on site for 6 to 8 months, that will not match the level of teaching what I've done. I don't know whether you are a same girl or not, but if I enroll in my site engineer course, definitely that level I've already explained. So whatever is required, that is sufficient from my course. You can go for QS job, planning jobs and all, no problem. यार मोहम्मद इरशाद, सिविल इंजीनियर कंप्यूटर, देखो यार, तुम लोगों को अगर सॉफ्टवेयर्स बनाना या सॉफ्टवेयर या कोडिंग सब करने का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली गो फॉर दोस कोर्स, उससे आपको नॉलेज बढ़ेगा. यू कैन डू दैट. ओके, दैट इज हाउ इट इज. आई मीन इट्स गुड, पर आपका जो क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर नहीं है. सिविल इंजीनियर विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक न्यू ब्रांच, जो हमारा ब्रांच हम सेकेंड ईयर, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ना. तो आप क्वेश्चन सही से डालो, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. सर, आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स, कैन आई टेक गो फॉर अ ड्राइंग रीडिंग कोर्स? If you go for a drawing reading course, after drawing reading course, you can go for a PB course. Are 𝗖𝗵𝗃𝗃𝗃, you message me tomorrow. Because if you don't know if you haven't watched my drawing reading course, then still drawing, it will go beyond your level of thinking. Go first finish the RCC drawing reading course, then go for PB का course. That's how it is. Yeah, Mohammad Irshad, hi, मैंने already explain किया है. नागेंद्र नागर, hello sir, yeah, hello. और कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? We'll wait for another 5 minutes, so that will be almost 1 hour of a live session. Yeah, Muskan, your doubt is done. Apart from that, yeah, Nagendra Nagar, hello. ठीक है. So any other questions you people have? Ritesh Gupta, your questions are done. Okay. सर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, अरे यार सारे मैंने कवर किया है. क्यों लोग तुम सलमान क्या क्वेश्चन पूछते हो यार? लो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीडिंग लो, एक कोर्स में एनरोल करो, कंटेंट में आ जाओ. क्यों एक एक छोटे बच्चे से के क्वेश्चन पूछे? मुझे पता है ना क्या पढ़ाना है तुम लोगों को.
पूरा पढ़ाता हूँ, मतलब जितना मेरा नॉलेज है उतना पढ़ा। मेरे को पता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ाना है, तो मैंने ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डाला है वहाँ पे। ऐसे थोड़ी आपको हम कोर्स बनाते हैं, जो कोर्स हम 30-30 घंटे का कोर्स बनाते हैं यहाँ पे। इधर आ जाओ, स्लो फुटिंग, एसेंट्रिक फुटिंग, 35,000 स्क्वायर मीटर वाले ड्राइंग में चले जाओ। ऑल द थिंग्स आर कवर्ड हियर। सबस्टेशन, यूजी टैंक, फ्लैग पोल फाउंडेशन ड्राइंग इज कवर्ड। और इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इंटीरियर का ड्राइंग्स है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिकल का, और क्या चाहिए, इंटीरियर का ड्राइंग्स है, जो तुमने सोचा भी नहीं वो वाला ड्राइंग डाल दिया। जिप्सम बोर्ड का ड्राइंग है, टॉयलेट डिटेल्स का ड्राइंग है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है, सीवेज पाइप लेआउट का है। ये तो इसका हो गया। फिर एक छोटे बिल्डिंग का भी मैंने ड्राइंग ऐड किया है, तो G+1 कमर्शियल बिल्डिंग का ड्राइंग है। यहाँ पे भी सारे स्टेयरकेस का, अदर डिटेल्स का ड्राइंग है। यू गो फॉर माय बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग का एक ड्राइंग है। इसमें भी हमने इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स को कवर किया। देखो इलेक्ट्रिकल का लेजेंड्स है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है, क्यों नहीं, सारे STP टैंक का ड्राइंग है, सारे चीजें। तुम कोर्स लेना सोचो ना, सारे चीज में कवर कर दूंगा। हाँ, ऑलरेडी एनरोल, देन नो प्रॉब्लम, इट्स कवर्ड। यू जस्ट गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यू वॉच इट। तो मैंने डिप्लोमा किया है सर, और मैं जॉब के साथ बीटेक करने की सोच रहा हूँ। लेकिन सर एक डाउट है, अगर जॉब के साथ बीटेक की डिग्री करने पे कंपनी डिग्री को मांगेगी, एक्सपीरियंस और डिग्री एक साथ, अरे वो चेक करना पड़ता है। आई थिंक दैट डजंट मैटर। देखो एंड ऑफ द डे कंपनी वाले को एक बंदा चाहिए जो अच्छे काम करा सकता है। अगर आपके पास उस लेवल का नॉलेज है, डेफिनेटली दे विल टेक यू। डिग्री एंड ऑल, अब कुछ साल के बाद ना ये सब डिग्री कॉलेज वाला सिस्टम सब चला जाएगा। जितने अभी ऑनलाइन में कोर्सेस आ रहे हैं, जितने फैकल्टीज ऑनलाइन में आ रहे हैं, इन द नेक्स्ट 5 to 10 years ऑल दिस अभी अभी आप खुद देखो ना, आपके पास डिग्री है, स्किल्स ही नहीं है, तो क्या कर पा रहे हो, राइट? सो व्हाट यू डू इज, आप साथ साथ में करो, नो प्रॉब्लम। अच्छे लेवल का नॉलेज गेन करोगे, डेफिनेटली आगे वाला बंदा आपको रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। दैट इज हाउ इट इज। सो देयर इज नो, अगर 3 साल कॉलेज जाके करने का कोई फायदा नहीं है, अनलेस यू आर डूइंग फ्रॉम NIT और IIT। लोकल कॉलेज से करने से अच्छा तुम जॉब के साथ साथ बीटेक कर लो, काफी है। बस अच्छे नॉलेज गेन कर लो। कोर्स नहीं लिया तो मेरे पास कोर्स ले लो, बढ़िया नॉलेज मैं दे दूंगा, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। सर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में काउंट होता है कि नहीं? इंटर्नशिप इज इंटर्नशिप ना, दैट कैन से इंटर्नशिप इज जस्ट टू गेट टू नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। सो यू कैन टेक इट एज अ लर्निंग एंड ऑल। ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट एज अ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अरे इंटर्नशिप कितने महीने का करोगे? 5-6 महीने का ये तो करोगे ना, उसको क्यों तुम वहां पे एक्सपीरियंस में डालोगे? जॉब के साथ बीटेक करने पे एक साथ एक्सपीरियंस और डिग्री कैसे शो करूंगा? अरे आई मीन, आई डोंट नो, आई मीन इतना डिटेल में कौन सोचेगा? जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपका वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट थोड़ी आपको दिखाना है, आप मार्क्स लिखोगे वहाँ पे। जब आई थिंक आई डोंट इवन रिमेम्बर द लास्ट टाइम समबडी आस्क्ड मी टू शो द सर्टिफिकेट्स इन द इंटरव्यू। आई मीन डिग्री का सर्टिफिकेट कोई पूछेगा नहीं। जब मैं टीचिंग जॉब के लिए गया था, वहां पे दिया जाता। टीचिंग जॉब में दे वांट ऑल दिस थिंग। इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक समबडी विल आस्क यू, आई डोंट नो, बट फ्यू कंपनी में आस्क। बट अगर आप अच्छे से रेज्यूमे प्रिपेयर करोगे ना, कौन आपका वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट लेके मैच कराने बैठेगा? उससे तो तुमसे काम कराना है ना। अगर आपके पास वो नॉलेज है, डेफिनेटली दे विल टेक यू। बट स्टिल यू कैन आस्क अनदर 2-3 पीपल दोज हैव डन। आई डोंट हैव मच आइडिया ऑन दैट, सो आई कैन नॉट गाइड यू इन अ रॉन्ग वे। आप एक बार चेक कर लिए, चेक करके आप देख लो। आप कोई और 2-3 लोगों से बात करो कि कैसे जिसने किया है। बट वट एवर बेस्ट नॉलेज आई हैव, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो ना मैंने एक्सटर्नली किया, उसमें क्या है? कैसे दिखाओगे? मैं आप बोलो मैंने एक्सटर्नली किया, तो हमको बस एग्जाम देना जाना था वहां पे, और क्या चाहिए? सिंपल। Okay, okay, nice. 15 December you took, no, Jaiswal Shubhang Kumar. Okay, nice. So have you gone through the lectures? You are okay with the content? You are happy with the content? Okay. Yeah, Jaiswal Shubham Kumar. Yeah, okay, nice. Yeah, yeah. देखो, so that is what I tell you. Enroll in my course. I don't. I mean, whatever investment आप अपने लाइफ में करोगे ना, I would say this would be the best investment. और इस साल का बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको होने वाला है, इतना मैं गारंटी दूंगा। एंड जिस लेवल का हम कंटेंट अभी नेक्स्ट बना रहे हैं ना अपने कोर्स में, डेफिनेटली द लेवल ऑफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन माय अपकमिंग लेक्चर्स आर डेफिनेटली going to help you a lot. That is the level of courses we are trying to make. अभी हम पूरे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, 2 महीने तो लगेगा मुझे पूरे PPT बना के चीजों को ऐड करना एंड ऑल। सो इट विल टेक सम टाइम, एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस कोर्स में इतना तो गारंटी दूंगा। अभी भी देता हूँ, फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड नहीं किया था, क्योंकि अभी 2 साल में आई हैव आल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आई विल डू इज
इस कोर्स को करने के बाद आई विल टेल यू नो, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंटरव्यू में चले जाओ एंड डेफिनेटली यू कैन रूल द इंटरव्यू। एंड अगर कोई बंदा तुम्हें 15, 16, 17 हज़ार के ऑफर दे रहा है, यू कैन जस्ट से आई डोंट वांट टू जॉइन दिस जॉब। उस लेवल का मैं आपको नॉलेज, आई एम नॉट टेलिंग कि वो ईगोनेस आएगा आपके अंदर, लेकिन उस लेवल का नॉलेज दूंगा सो दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस, अगर ये वाला जॉब नहीं मिलेगा दूसरा एक और जॉब भी आपको मिल सकता है। उस लेवल पे हम कोर्सेज बना रहे हैं अभी, तो इट विल टेक टाइम, अनदर 2 months आई वांट पीपीटी बनाना, रोज पीपीटी तो बना रहा हूँ, फिर वीडियोस भी हमें कलेक्ट करना है, विल ट्राई टू डू दैट, will try to do so that will be my goal for next year, so that people going for the interview, क्योंकि होता क्या है ना, लोग अगर 15,000 14,000 13,000 की सैलरी पे रखेंगे, आपको सीधा सीधा मना ही करना है, आपको करना ही नहीं है ऐसे वाले जॉब्स। आप सीधा एटलीस्ट आई वुड से 18, 20, 22, 25,000 की सैलरी पे अप्लाई करिए, नॉलेज गेन करिए, सो दैट इज अ लेवल वी हैव डन। Sir, I have always had a doubt that do even civil companies keep screening test that aptitude reasoning as software companies do? I don't have idea. Muskan, you put this question in that this group. No, we have a group. No, civil engineers where Vinay and all are there. I think those people can answer better because I don't know. I mean, I don't know how this interviews and all will happen. Uh, that screening and all. You better put the question in the group. They can answer better. Okay, I started yesterday with level. Yes, fine. Level 1 you finish it completely, शुभम। क्या करेंगे, 2 महीने के बाद पूरा हम रिवाइज करेंगे कोर्स को, उसके बाद आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है, फाइन। अभी के लिए काफी है, फिर भी हम अपडेट कर देंगे। ओके डन यार, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, दैट इज इनफ। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल दोज हैव जॉइंड माय लाइव सेशन, थैंक यू। एंड दोज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने भी किया नहीं है, सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। And those who want to enroll in my course, definitely दो बार सोचने की जरूरत नहीं है, invest in my course, that will be the best investment in your life that you're going to do, and you'll thank me later in your life. That's it, and thank you everyone for joining my course. Maybe after 2-3 days I'll come back again. हाँ सर, आज ही आपने मेरा वीडियो, ओके आप ही हो क्या शुभम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फाइन फाइन। या वन मोर थिंग, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया मेरे चैनल पे, दिस वाला, ये वाला जो वीडियो है ना, या शुभम वाला वीडियो, ठीक है। सो ये शुभम वाला जो वीडियो अभी हमारे साथ चैट कर रहे हैं ना, जयसवाल शुभम का, वही बंदा है, ठीक है शुभम, गुड गुड, आप करिए उसको। बाकी कोई डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, और पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है, फाइन फाइन शुभम। बाकी अगर कोई डाउट होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास, बस मेरे को व्हाट्सएप करिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, फाइन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन, सो गुड नाइट, एंड मे बी आई विल ट्राई टू जॉइन maybe after 1 or 2 days, ठीक है। एंड लास्ट वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स, डेफिनेटली सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए। अगेन ऑफर आपको कभी मिलेगा नहीं, दिस विल बी द लास्ट ऑफर। अगर आप मेरे को मैसेज भी करोगे सर ऑफर दोबारा लेके आओ, वी आर नेवर गोइंग टू ब्रिंग द ऑफर अगेन, ठीक है। चलो, सो आई विल सी यू बैक इन अनदर वीडियो, एंड ये वाला आप जरूर वीडियो आप देख लीजिए, अगर कोई बंदा फ्रेशर है, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल सी यू बैक इन सम अदर लाइव सेशन, थैंक यू।